Dear devotees, now we are going to perform Samuhika Poornami Sri Ramasaita Satyanarayana Swami Pratam. Please arrange all your puja items and follow us. Hare Om. Dhruvante Raja Varma Dhruvandevo Brihaspatihi Dhruvanta Indraschagnischa Rashtram Dharayatam Dhruvam Om Devim Vajamajananta Devaha Tam Vishvarupa Pashavo Vadanti Sano Mandreshu Murdhanjuhana Dhenurvagasmanu Pusushtudayidu Ayam Muhurta Sumuhurtostu Supratishthitamastu Shuklam Bharadaram Vishnum Shashivarnam Chaturbhajam Prasannavadanam Dhyaye Sarva Vignopashantaye Yasya Svirta Bhaktradhya Parishadhya Parasharam Vignam Nignanti Satatam Vishwaksenandamasraye Tadeva Lagnam Sudinam Tadeva Dharabalam Chandrabalam Tadeva Vidyavalam Deva Balam Tadeva Lakshmi Padede Grinasmarami. Dear devotees, please take some yellow rice and keep your left hand and with right thigh Sankalpa Mudra. Shri Govinda 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 Mahavishnu Ajnaya Pravartamanasya Kraunchadvipe Ramanakavarshe Gotirthakandhe Shri Shiva Vishnu Shri Shiva Vishnu Divya Alaya Sannidho Shri Rama Sahita Satyanarayana Vratamandape Samasta Bhagavata Acharya Sannidho Adya Brahmanaha Dividiya Pararthe Shri Shveta Varaha Kalpe Vaivasvata Manvantare Kaliyuge Prathamapade Shalivahanashake Prabhavadi Sashti Samvatsarana Madhye Shri Plavanama Samvatsare Uttarayane Himavantarudau Pushyamase Shuklapakshe Pournamya Vasarastu Hinduvasare Shubhavasare Punarvasu Nakshatre Shubhayoge Shubhagarana Evanguna Visheshana Visishtayam Asyam Shubhaditau Shri Rama Sahita Satyanarayana Devata Uddishya Prityartham Shri Rama Sahita Satyanarayana Swami Krupaya Sriman Srimataha Gotrodbhavasya. Please see your Gotra and your Nakshatra and your name with your family members also. Yeah, repeat after me. Mama Saha Kutumbasyana Saha Bandhavasyana Shema Sthairya Dairya Virya Vijaya Abhaya Ayuhu Arogya Aishwarya Abhi
वृद्ध्यर्थं श्री रमा सहित सत्यनारायण स्वामी कृपया मम समस्त दोष भीतिबाधा सर्वत्र आटंकादि निवृत्ति द्वारा मनोवांच अभीष्ट फल सिद्ध्यर्थं अद्य पौर्णमी शुभदिने श्री रमा सहित सत्यनारायण स्वामी व्रत श्री शिव विष्णु दिव्य आलय सन्निधे आचार्य श्रीमुखेन अद्य करिष्ये. Please leave the akshatas in a cup. With water. Yeah. Please wash your hand. आदौ निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं विघ्नेश्वर पूजांकरिष्ये. Do नमस्कार to श्री महागणपति. Do प्रार्थना. ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तवम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत नः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्. श्रीमन्. So please take the Panchapatra, that's cup and spoon. If you don't have a Panchapatra, please take one cup and spoon with us and put some yellow rice into the cup. Kalasha Puja. So now we are going to do first Kalasha Puja. After that we are going to do Ganapati Puja. कलशस्य मुखे विष्णुकण्ठे रुद्रसमाश्रिताः मूले तत्र स्थितो ब्रह्ममध्ये मातृगणास्पदाः कुक्षोदसागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोदगिर्वेदः सामवेदो अथर्वणः अङ्गैष्टसहिताः सर्वे कलशाम्बुसमाश्रिताः अत्र गायत्रे सावित्रे सरस्वती शान्तिपुष्टैकरैस्तदा आयान्तो कलशपूजार्थं दुर्तक्षयद्वारा गङ्गे जमुने चैव गोदावरि सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधं कुरु. कलशस्थवर्णाय नमः. Please take some Kalasha Puja Tirtha and sprinkle the water to every items and then mantrapa and yourself. Puja items and yourself. Om Bhurбhuvasvah तदङ्गत्वेन श्रीमन्महागणाधिपतिपूजाख्यं करिष्ये. ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्. स्वरमस्मिन् चित्रपटे अस्मिन् बिम्बमध्ये च श्रीवल्लभमहागणपतिं ध्यायामि. महागणपतिम् आवाहयामि. महागणपतये नमः. रत्न सिंहासनं समर्पयामि. महागणपतये नमः. Please offer the yellow rice and take some water spoon and sprinkle the water to Lord Ganapati. Mahaganapataye namaha. Padyam samarpayami. Argyam samarpayami. आचमनीयं समर्पयामि. औपचारिकस्नानं समर्पयामि. स्नानानन्तरमिदं आचमनीयं समर्पयामि. Please take some yellow rice and offer to Lord Ganesha. वस्त्र यज्ञोपवीत उत्तरीय आभरणार्थे अक्षतां समर्पयामि. And take गंध कुंकुमम offer to Lord Ganesha. गंधां धारयामि. हरिद्राचूर्णं समर्पयामि. कुंकुमादिपरिमलद्रव्याणि समर्पयामि. And also offer the yellow rice one more time. अक्षतां समर्पयामि. पुष्पमालिकां समर्पयामि. पुष्पैः सम्पूजयामि. Now we are going to chant the 16 namas. So offer the flower petals to Lord Ganesha. Om Sumukhaaya नमः. Om एकदन्ताय नमः. ओम कपिलाय नमः. ओम गजकर्णकाय नमः. ओम लंबोदराय नमः. ओम विकटाय नमः. ओम विघ्नराजाय नमः. ओम विनायकाय नमः. ओम द्वैमातुराय नमः. ओम धूमकेतवे नमः. ओम गणाध्यक्षाय नमः. ओम बालचंद्राय नमः. ओम गजाननाय नमः.
ॐ वक्रतुण्डाय नमः ॐ शूर्पकर्णाय नमः ॐ हेरम्बाय नमः ॐ स्कन्दपूर्वजाय नमः सिद्धिविनायकस्वामिने नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि. If you have a dhupam, please take the dhupam and offer to Lord Ganesha. Otherwise, you can put some yellow rice to Ganesha. Om Dashangam Gukgulo Dhupam Sugandham Cha Manoharam Aadre Sarvadevana Dhupoyam Prajarashyadam Deepa. Om Sajyam Travartya Sanjuktam Manhina Yojitam Maya Grahanamangalam Deepam Trailokyatamiravaham Mahaganapataye Namaha Mangala Deepam Sandarshayami. And drop one drop water in the cup. Mahaganapataye Namaha Dhupadevanandram Achamaniyam Samarpayami. Take one fruit and keep the fruit front of the Lord Ganesha. Do the Nevedya, sprinkle the water to the fruit. Om Bhutbhuvassuvaha Madhuvatartayate Madhaksharantu Sindavaha Madhvirna Santoshasi Madhunastamadoshasi Madhumatparthivagam Rajaha Madhujyorastu Napita Madhumanno Vanaspatihi Madhumanno Astu Suryaha Madhvirnavo Bhavantunaha Madhu Madhu Madhu. Offer 6 times. Pranaya Swaha Panaya Swaha Vyanaya Swaha Udanaya Swaha Samanaya Swaha Brahmane Swaha. Repeat with me. Mahaganapataye Namaha Ganapataye Namaha Arangaphalam Amritam Nivedayami. After the yellow rice and put 1 drop water. Achamaniyam Samarpayami. So now the Mangala Harati is going to do. Please follow with us. Om Namo Vratapataye Namo Ganapataye Namah Pramadapataye Namaste Astu Lambodadaye Gadantaye Vigna Vinashine Shivasudaya Shri Varadamurtaye Namaha Vigneshwara Mahaganapataye Namaha. Offer the yellow rice to Lord Ganesha. Anandamangala Nirajanam Sandarshayami. Boliye Mahaganapati Bhagavan ki Jai. So now we are going to do a Pitha Puja, Atma Puja, Ghanta Puja. Om Agamarthanta Devanam Gamanarthanta Rakshasam Kurave Gantharavandatra Devata Vanalancharam. Pitha Puja Adhara Shakti Namaha Mula Prakriti Namaha Adivaraha Namaha Adipurma Namaha Anantasana Namaha Yoga Pithatmane Namo Namaha. Please offer yourself the yellow rice to you. Om Atmane Namaha Jivatmane Namaha Paramatmane Namaha Jnanatmane Namo Namaha. So now we are going to invoke Navagraha Devata and Indra the Ashtadikpalaka Devata and Brahma the Panchapalaka Devatas. So first we are going to invoke Navagraha Devata. Whatever you have in your home, pitcher, kalasham, please offer the yellow rice every time. Om Asatyena Vidasa Vartamana Niveshayanamritam Mrityam Cha Hiranyayena Savidarthena Devo Yati Bhavana Vipashyanna. Om Devata Sigitaya Aditya Graham Dhyayami Aditya Graham Avahayami. One more time, take the yellow rice. Om Apyayasva Sametate Vishwatas Soma Vrishniyam Bhavavajasya Sangate. Bhavasvaromasmin Mandale Chandragraham Dhyayami Chandragraham Avahayami. Om Agnirmorta Kagatpatim Prajavya Ayam Apagam Redagam Sajanvati. Bhavasvaromasmin Mandale Angarakagraham Dhyayami Angarakagraham Avahayami. Om Utpadhyasvagne Pratijagrikyamashta Purte Sakam Srjetha Majancha Punagranmagastapitaram Yavanamanvatakam Sedvyatinandramedam. Bhavasvaromasmin Mandale Devata Pratyadevata Sahitam Budagraham Dhyayami Budagraham Avahayami. Om Brahaspade Adhikataryo Arha Advimadvibhadhi Pratamajjanesho Yadveda Gachava Sarta Pradata Tasma Satravinandehi Chitram. Bhavasvaromasmin Mandale Adhidevata Pratyadevata Sahitam Brahaspati Graham Dhyayami Brahaspati Graham Avahayami.
Now we are going to invoke Shukra Graha. Om Pravashukraj Bhanave Bharadhagam Havyam Madinchagnaje Sputam Yo Devyani Manushadano Kashyantara Vishwani Vidmana Jagati Bhavasuro Masmin Mandale Adidevata Pratyadidevata Sahitam Shukra Grahan Dhyajami Avahajami. Now we are going to invoke Lord Shanishwara. Om Shanno Devi Radhishtayato Bhavantu Bhidaye Shanyo Ravishravantu Naha Bhavasromasmin Mandale Adidevata Pratyadidevata Sahitam Shanishchara Graham Dhyayami Shanishchara Graham Avahayami. Now we are going to invoke Rahu Graha. Om Kayanashchitra Abhavadavati Sadavradasakha Kayashajashtayavata Bhavasromasmin Mandale Adidevata Pratyadidevata Sahitam Rahugraham Dhyayami Rahugraham Avahayami. We are going to invoke Ketu Graha. Om Ketan Gunamanna Kedave Vesho Marya Veshase Shamashatbhirajayatha Bhavasromasmin Mandale Adidevata Pratyadidevata Sahitam Ketugraham Dhyayami Ketugraham Avahayami. Now we are going to invoke the Ashtadik Palaka Devatas and take some yellow rays, and every time you want to offer, when we are showing the Avahayami, you want to offer the yellow rays to Indra and Agni, Yama, Niruti, Varuna, Vayu, Soma, Ishana. These are, they are all Ashtadik Palaka Devatas. Please offer the yellow rays. Om Indrambo Vishwadaspatire Havamahe Dalebhyah Asmakamastu Kevalaha Bhavasram Indram Ashtadik Dhyayami Avahayami. Om Agnirmurdhadivakvagatpatih Prithivya Ayam Apagam Retagam Sujanvati Bhavasramasmin Mandale Agnim Dikpalakam Dhyayami Avahayami. Om Yamaya Somam Sunada Yamaya Juhada Havihi Yamagha Yajño Gachat Yajnitoto Arankritaha Bhavasramasmin Mandale Yamam Dharmarajam Dhyayami Avahayami. Om Moshanah Para Paradardurhana Avadite Padishta Drishnaya Saha Bhavasramasmin Mandale Nirritim Dikpalakam Dhyayami Avahayami. Om Tattayami Brahmana Vandamanastalashaste Idamano Havirpihi Aheramano Varuneha Bodhyadusakam Samanaya Pramoshi Bhavasramasmin Mandale Varunam Dikpalakam Dhyayami Avahayami. Om Ano Nigidbhishatani Viradharam Sahasrani Virupajahi Yajñam Vajo Asmin Havishi Madayasva Yujam Padasvastibhissadanaha Bhavasramasmin Mandale Vayum Dikpalakam Dhyayami Avahayami. Om Somo Dhenam Somo Arvantamasam Somo Viram Kalmanyam Dadhatu Sadhanyam Vidathyam Sabhenyam Pitrashravanam Yodata Shatasmi Bhavasramasmin Mandale Somam Dikpalakam Dhyayami Avahayami. Tamishanam Jagatastastu Shaspatim Dhyanjinvamavase Homahe Vayam Pushano Yatha Veda Samasatvrte Rakshita Vajuratabdhasvastaje Bhavasramasmin Mandale Ishan Dikpalakam Dhyayami Avahayami. Now we are going to invoke the Panchapalaka Devatas. Please offer the yellow rice into the pitcher or in the kalasha. Om Ganana Tva Ganapatikam Havamahe Kavim Kavinamapamashravastabam Jeshtarajam Brahmanam Brahmanaspada Nashnavanno Devasida Sadhanam Bhavasramasmin Mandale Mahaganapatim Lokapalakam Dhyayami Avahayami. Om Brahmajajnanam Prathamam Purastat Visimatas Surujo Vena Avaha Sabudhnaya Upama Asya Vishta Sadascha Jonimasadascha Pibaha Bhavasramasmin Mandale Brahmanam Lokapalakam Dhyayami Avahayami. And take some yellow rice. Om Idam Vishna Vichakrame Tredhanita Depadam Samaudamasya Bhagam Sure Bhavasramasmin Mandale Vishnam Lokapalakam Dhyayami Avahayami.
ॐ कद्रुद्राय प्रचेतसे मेधष्टमाजतव्यसे योजे मशन्तमगं हृदे सर्वो ह्येष रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु भूर्भुवस्सुरम् अस्मिन् मण्डले रुद्रं लोकपालकं ध्यायामि आवाहयामि ॐ जातवेदसे सुमवामसोममराति यतो निगहाति वेदः स नः परिषदति दुर्गाणि विश्वानावेव सन्धं दुरितात्यग्निः भूर्भुवस्सुरम् अस्मिन् मण्डले दुर्गां लोकपालकीं ध्यायामि आवाहयामि. Now we are going to invoke Lord Varuna into the kalasha. So take some yellow rice and offer to in the kalasha. Om तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वर्णेह भोज्यदशकं समानाय प्रमोषीः. ॐ ऊर्जाग्रे राक्षसान् घोरान् चिन्तिकर्मविघातिनः त्वामर्पयामि कुम्भेऽस्मिन् साफल्यं कुरु कर्मणि. वृक्षराजसमुद्भूताः शाखायाः पल्लवत्वजः युष्मान् कुम्भेऽस्वर्पयामि सर्वदोषावनुत्तजे. नालिकेरसमुद्भूतत्रिनेत्रहरसंहिता शिखया दुरितं सर्वं पापं पीडां च मे नुद. सर्वे समुद्रा सलिलस्तीर्थानि जलदा हृदाः आयान्तु देवपूजार्थं दुरितक्षयकारकाः. इमं मे वर्णश्रुतिहवमद्या च मृडज त्वामवस्युराचके. तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वर्णेह भोज्यदुषकं समानाय प्रमोषीः. भूर्भुवस्सुरम् अस्मिन् कुम्भमध्ये गङ्गादि सकलतीर्थाधिपतिं श्रीवरुणं ध्यायामि वरुणमावाहयामि. Om. Now we are going to invoke Ramadevi Sahita Shri Satyanarayana Swami. Please take some flowers and yellow rice with your hand and hold like this. Om. सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्. नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्. हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावः. महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्. शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं. मेघश्यामं पीतकौसेजवासं श्रीवत्साङ्गं कौस्तुभोर्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम्. Please offer the yellow rice and flowers in the kalasha. Om Bhuvassuram Asmin Kumbhamadye Saparivar Sahiತ Shri Ramadevi Sameta Satyanarayana Swaminam Dhyayami. Satyanarayana Swaminam Avahayami. Asmin Bimbhamadye Shri Ramadevi Sameta Satyanarayana Swaminam Dhyayami Avahayami. Avahitanam Sarvasam Devatanam प्राणप्रतिष्ठार्थे जपे विनियोगः. ॐ असूनीते पुनरस्मासुचक्षुः पुनः प्राणमेनो देहि भोगम् योपश्येम सूर्यमुच्चरन्तमनुमते मृळजानस्वस्ति. आवाहित रमादेवी सपरिवार सहित श्री रमादेवी समेत सत्यनारायण स्वामी प्राणान् प्रतिष्ठापयामि. So all deities are invoked and they are in our mandapa. So we are going to do the Shodashopachara Puja to all deities. So take some yellow rice and flowers also. Om Sahasrashirusha Purushah Sahasrakshah Sahasrapad Sabhomim Vishwato Vrutva Atyadhishtadashangulam. Yavahayami asanam samarpayami Purusha evedakam sarvam यद्भूतं यच्च भव्यं उतामृतत्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहति. पादयोगपाद्यं समर्पयामि एतावानस्य महिमा अतो ज्यायागश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि
त्रिपादस्यामृतं दिवि हस्तयोर्घ्यं समर्पयामि त्रिपादोर्ध्वोदयेत् पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामते शासनानशने अभिः मुखे आचमनीयं समर्पयामि तस्मात् विरालजायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमतो पुरः वस्त्रार्थे पवीतार्थे अक्षतां समर्पयामि अथ शुद्धोदकेन पञ्चद्रव्यस्नानमहम् अद्य करिष्ये So we are going to do now Panchaamritabhishekam. If I have an idol like Satyanarayana Swami, please keep it in front of you and offer the milk, curd, honey, and ghee, and sugar. If you don't have a vigraha, so just sprinkle the water to the kalasha and chitrapata to picture. विष्णोर्नकं वीर्याणि प्रवोचयं पार्थिवानि विममे रजागं श्रियो अस्कभायदुत्तरगं सदस्तं विचक्रमाणस्त्रे धोरुगायो विष्णोरराटमसि विष्णोः पृष्ठमसि विष्णोः चक्रेस्तो विष्णोः स्योरसि विष्णोः ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा तदस्य प्रियमपि पाथो अस्याम् नरो यत्र देवयवो मदन्ति रुद्रमस्य सहि बन्धुरित्थः विष्णोः पदे परमे मध्व उत्सः प्रतद्विष्णुस्तवते वीर्याय मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः यस्योर्षत्रिषु विक्रमणेषु अधिक्षयन्ति भुवनानि विश्वाः परो मात्रया तनुवावृधानां न ते महित्वमन्वष्णुवन्ति उभेते विद्मरजसि पृथिव्या विष्णो देवत्वं परमस्य वित्से विचक्रमे पृथिवीमेष एतः क्षेत्राय विष्णुर्मनुषेदशस्यन् ध्रुवासो अस्य कीलयोजनासः रुक्षति पुंसुजनिमाचकारः तद्देव पृथिवीमेष एतः विचक्रमेष तच्च सम्महित्वा प्रविष्णुरस्तु तव सस्तवीयान् त्वेषस्य स्तविरस्य नाम अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्यासमस्वधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि ददे पदम् समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो तानि वस्पशे इन्द्रस्य यज्ञसखा तद्विष्णोः परमं पदकं तदा पश्यन्ति सूरजः दिवेव चक्षुराततं तद्विप्रासो विपन्यवो जागर्वागं सस्वमिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदम् पर्याप्य अनन्तरायाय सर्वस्तोमोदिरात्तमुत्तममहत्भवति सर्वस्याख्ये सर्वस्य सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति अमृताभिषेकोऽस्तु Please wait for some time. ओम अंगीरसगोत्रोद्भवस्य अश्विनी नक्षत्रे जातस्य प्रसादराव नामधेयस्य पुबा नक्षत्रे जातस्य निखिला नाम्न्याः रेवती नक्षत्रे जातस्य कृषै नामधेयस्य मघा नक्षत्रे जातस्य अद्वै नामधेयस्य यजमानसो कुटुम्बस्य
पुस्तानक्षत्रे जातस्य मणिवारन्नामलिङ्गं नामधेयस्य श्रवणनक्षत्रे जातायाः जिगन्ती नाम्न्याः आश्लेषानक्षत्रे जातस्य ऋषिनामधेयस्य आश्लेषानक्षत्रे जातायाः श्वेता नाम्न्याः आश्लेषानक्षत्रे जातायाः श्रुतिनाम्न्याः यजमानसोकुटुम्बस्य भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य सुशान्त मोहन्ती नामधेयस्य गीताराणी नाम्न्याः नर्मदा नाम्न्याः अंजना नाम्न्याः कश्यपगोत्रोद्भवस्य कंदन नामधेयस्य कश्यपगोत्रो अमिल नामधेयस्य अस्मीर नामधेयस्य यजमानसुकुटुम्बस्य ओम मार्कण्डेयगोत्रोद्भवस्य स्वाति नक्षत्रे जातायाः अनिता नाम्न्याः अनुराधा नक्षत्रे जातस्य नारायण ईश्वर साई नामधेयस्य यजमानसुकुटुम्बस्य गौतमगोत्रोद्भवस्य अमाजाना चाकी नाम्न्याः सयान नामधेयस्य कृष्टिना नाम्न्याः सुमन नामधेयस्य अर्वकलगोत्रोद्भवस्य रमामोहना नाम्न्याः राधिका नाम्न्याः राजीव नामधेयस्य सरिका नाम्न्याः यजमानसकुटुम्बस्य कौण्डन्यगोत्रोद्भवस्य हेमंत संपत् नामधेयस्य सुमन नामधेयस्य मूलानक्षत्रे जातस्य हेमंत संपत् नामधेयस्य पुष्यनक्षत्रे जातस्य सचिन नामधेयस्य उत्तरप्रोष्ठपदा नक्षत्रे जातस्य इंद्रा नाम्न्याः आरुद्रा नक्षत्रे जातायाः यजमानसकुटुम्बस्य गर्गगोत्रोद्भवस्य पूर्वप्रोष्ठपदा नक्षत्रे जातायाः ज्योति अय्यर नाम्न्याः रोहिणी नक्षत्रे जातस्य चिदम्बरम् अय्यर नामधेयस्य चित्रा नक्षत्रे जातस्य शिवराम अय्यर नामधेयस्य उत्तरप्रोष्ठपदा नक्षत्रे जातायाः सुप्रिया सुब्रह्मण्यन् नाम्न्याः उत्तरप्रोष्ठपदा नक्षत्रे जाताः सुप्रीता नाम्न्याः यजमानसकुटुम्बस्य कश्यपगोत्रोद्भवस्य श्रवण नक्षत्रे जातस्य प्रेम पिल्लै नामधेयस्य उत्तरप्रोष्ठपदा नक्षत्रे जातस्य जातायाः रोहिणी नाम्न्याः उत्तरप्रोष्ठपदा नक्षत्रे जातस्य दावेन नामधेयस्य पूर्वाषाढा नक्षत्रे जातस्य ध्रुव नामधेयस्य यजमानसुकुटुम्बस्य भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य ज्येष्ठा नक्षत्रे जातस्य रङ्गराजन् नामधेयस्य चित्रा नक्षत्रे जातायाः मित्रा नाम्न्याः हस्ता नक्षत्रे जातायाः श्रेया नाम्न्याः यजमानसुकुटुम्बस्य मुद्गरसगोत्रोद्भवस्य निवेदिता नाम्न्याः ऋषभराशो जातायाः हरिषा नाम्न्याः आरो नामधेयस्य विभु नामधेयस्य लिहर नामधेयस्य पुष्पा नाम्न्याः नारायणी अन्ना नाम्न्याः यजमानसुकुटुम्बस्य लोहित कौशिकगोत्रोद्भवस्य शतवशन नक्षत्रे जातस्य वेङ्कटकृष्णन् नामधेयस्य रेवती नक्षत्रे जातायाः वीणा नाम्न्याः रेवती नक्षत्रे जातायाः श्रीलक्ष्मी नाम्न्याः यजमानसकुटुम्बस्य विष्णुगोत्रोद्भवस्य सौम्या शेषाद्री नामधेयस्य यजमानसकुटुम्बस्य कश्यपगोत्रोद्भवस्य पूर्णिमा चितिन् नामधेयस्य यजमानसकुटुम्बस्य विष्णुगोत्रोद्भवस्य नरेन्द्रमोडी नामधेयस्य यजमानसकुटुम्बस्य कश्यपगोत्रोद्भवस्य रेवती नक्षत्रे जातस्य सन्तोष नामधेयस्य पुनर्वसो नक्षत्रे जातायाः रम्या श्रीनाम्न्याः मुद्गरसगोत्रोद्भवस्य विश्वसहास नामधेयस्य विश्वनाथन शास्त्री नामधेयस्य नागमणी नाम्न्याः शरत् नामधेयस्य रम्या नाम्न्याः यजमानसकुटुम्बस्य हरित नामधेयस्य उत्तरप्रोष्ठपदा नक्षत्रे जातस्य श्रीनिधि नाम्न्याः अश्विनी नक्षत्रे जातायाः पद्मजा नाम्न्याः अश्विनी नक्षत्रे जातस्य गुरुप्रसाद नामधेयस्य रेवती नक्षत्रे जातस्य नितिन नामधेयस्य यजमानसकुटुम्बस्य वातुलगोत्रोद्भवस्य पुष्यनक्षत्रे जातस्य वेङ्कटरामशर्मणः पूर्वाषाढा नक्षत्रे जातायाः चित्रा नाम्न्याः श्रवणनक्षत्रे जातस्य अय्यप्पन् शर्मणः रोहिणी नक्षत्रे जातायाः यमा नाम्न्याः पूर्वाषाढा नक्षत्रे जातायाः लक्ष्मी नाम्न्याः यजमानसकुटुम्बस्य लणी नामधेयस्य धनिष्ठा नक्षत्रे जातायाः अशोक नामधेयस्य उत्तरप्रोष्ठपदा नक्षत्रे जातायाः जातस्य सबरीश नामधेयस्य विशाखा नक्षत्रे जातस्य महादेवन नामधेयस्य पुष्यनक्षत्रे जातस्य बालकृष्णन् नामधेयस्य पुष्यनक्षत्रे जातस्य सती नाम्न्याः पूर्वफल्गुनी नक्षत्रे जातायाः सूर्यजित् नामधेयस्य मघा नक्षत्रे जातस्य मिथुन नामधेयस्य मूला नक्षत्रे जातस्य लिशा नाम्न्याः पुष्यनक्षत्रे जातायाः राजीव नामधेयस्य मूला नक्षत्रे जातस्य
वाणीनाम्याः श्रवणनक्षत्रे जातायाः यजमानसकुटुम्बस्य सर्वेषां भक्तमहाजनानां च एतेषां यजमानानां सहकुटुम्बानां च श्री सपरिवारसहित रमादेवी समेत सत्यनारायणस्वामिनां परिपूर्ण अनुग्रहप्रसादेन सर्वमङ्गलप्राप्त्यर्थम् आयुरारोग्याभिवृद्ध्यर्थम् अस्मिन् शुभदिने पौर्णम्यां शुभदिने रमादेवी समेत सत्यनारायणस्वामी पूजामाचार्यप्रमुखैः अद्य करिष्ये। स्नानानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि। ओम नमः सहित श्री सत्यनारायणस्वामिने नमः। वस्त्रार्थे पपीतार्थे पुष्पैः पूजयामि। अक्षतां समर्पयामि। पुष्पमालिकां समर्पयामि। पुष्पैः सम्पूजयामि। नमः सहित श्री सत्यनारायणस्वामिने नमः। गन्धान् धारयामि। धारयामि। हरिद्राकुङ्कुमं समर्पयामि। अक्षतां समर्पयामि। पुष्पमालिकां समर्पयामि। पुष्पैः सम्पूजयामि. So now we are going to do the Ashtotra Shatanama for Lord Satyanarayana Swami and Kukumarchanam for Lord Lakshmi Devi. Please offer the flowers or yellow rice to Lord Mahavishnu Satyanarayana Swami. ॐ श्री सत्यदेवाय नमः। ॐ श्री सत्यात्मने नमः। ॐ श्री सत्यभूताय नमः। ॐ श्री सत्यपुरुषाय नमः। ॐ श्री सत्यनाथाय नमः। ॐ श्री सत्यसाक्षिणे नमः। ॐ श्री सत्ययोगाय नमः। ॐ श्री सत्यज्ञानाय नमः। ॐ श्री सत्यज्ञानप्रियाय नमः। ॐ श्री सत्यनिधये नमः। ॐ श्री सत्यसम्भवाय नमः। ॐ श्री सत्यप्रभवे नमः। ॐ श्री सत्य ईश्वराय नमः। ॐ श्री सत्यकर्मणे नमः। ॐ श्री सत्यपवित्राय नमः। ॐ श्री सत्यमङ्गलाय नमः। ॐ श्री सत्यगर्भाय नमः। ॐ श्री सत्यप्रजापतये नमः। ॐ श्री सत्यविक्रमाय नमः। ॐ श्री सत्यसिद्धाय नमः। ॐ श्री सत्य अच्युताय नमः। ॐ श्री सत्यवीराय नमः। ॐ श्री सत्यबोधाय नमः। ॐ श्री सत्यधर्माय नमः। ॐ श्री सत्य अग्रजाय नमः। ॐ श्री सत्यसन्तुष्टाय नमः। ॐ श्री सत्यवराहाय नमः। ॐ श्री सत्यपरायणाय नमः। ॐ श्री सत्यपूर्णाय नमः। ॐ श्री सत्य औषधाय नमः। ॐ श्री सत्य ॐ श्री सत्याय नमः। ॐ श्री सत्यप्रवर्धनाय नमः। ॐ श्री सत्यविभवे नमः। ॐ श्री सत्यज्येष्ठाय नमः। ॐ श्री सत्यश्रेष्ठाय नमः। ॐ श्री सत्यविक्रमिणे नमः।
ओम श्री सत्यमेधाय नमः। ओम श्री सत्य अधीशाय नमः। ओम श्री सत्यक्रतवे नमः। ओम श्री सत्यकालाय नमः। ओम श्री सत्यवत्सलाय नमः। ओम श्री सत्यवासवे नमः। ओम श्री सत्यमेघाय नमः। ओम श्री सत्यरुद्राय नमः। ओम श्री सत्यब्रह्मणे नमः। ओम श्री सत्य अमृताय नमः। ओम श्री सत्यवेदांगाय नमः। ओम श्री सत्यचतुरात्मने नमः। ओम श्री सत्यभोक्त्रे नमः। ओम श्री सत्यशुचये नमः। ओम श्री सत्य आर्जिताय नमः। ओम श्री सत्य इंद्राय नमः। ओम श्री सत्य संग्रहाय नमः। ओम श्री सत्य स्वर्गाय नमः। ओम श्री सत्य नियमाय नमः। ओम श्री सत्यमेधाय नमः। ओम श्री सत्यवेद्याय नमः। ओम श्री सत्यपीयूषाय नमः। ओम श्री सत्यमायाय नमः। ओम श्री सत्यमोहाय नमः। ओम श्री सत्यसुरानन्दाय नमः। ओम श्री सत्यसारगाय नमः। ओम श्री सत्यतपसे नमः। ओम श्री सत्यसिंहाय नमः। ओम श्री सत्यमृगाय नमः। ओम श्री सत्यलोकपालकाय नमः। ओम श्री सत्यस्थिताय नमः। ओम श्री सत्य औषधाय नमः। ओम श्री सत्यदिक्पालकाय नमः। ओम श्री सत्यधनुर्धराय नमः। ओम श्री सत्य अम्बुजाय नमः। ओम श्री सत्यकाव्याय नमः। ओम श्री सत्यगुरवे नमः। ओम श्री सत्यन्यायाय नमः। ओम श्री सत्यसाक्षिणे नमः। ओम श्री सत्यसंवृताय नमः। ओम श्री सत्यसंप्रवह्नये नमः। ओम श्री सत्यसंप्रदाय नमः। ओम श्री सत्यवह्नये नमः। ओम श्री सत्यवायुवे नमः। ओम श्री सत्यशिखराय नमः। ओम श्री सत्य आनंदाय नमः। ओम श्री सत्य अधिराजाय नमः। ओम श्री सत्य श्रीपादाय नमः। ओम श्री सत्य गुह्याय नमः। ओम श्री सत्य उदराय नमः। ओम श्री सत्य हृदयाय नमः। ओम श्री सत्य कमलाय नमः। ओम श्री सत्यनालाय नमः। ओम श्री सत्य हस्ताय नमः। ओम श्री सत्यबाहवे नमः। ओम श्री सत्य मुख्य मुखाय नमः। ओम श्री सत्यजिह्वाय नमः। ओम श्री सत्यधर्मष्टाय नमः। ओम श्री सत्यनासिकाय नमः। ओम श्री सत्यस्तोत्राय नमः। ओम श्री सत्यचक्षुषे नमः। ओम श्री सत्यशिरसे नमः। ओम श्री सत्यमकुटाय नमः। ओम श्री सत्य अंबराय नमः। ओम श्री सत्य आभरणाय नमः। ओम श्री सत्य आयुधाय नमः। ओम श्री सत्य श्रीवल्लभाय नमः। ओम श्री सत्यगुप्ताय नमः। ओम श्री सत्य पुष्कराय नमः। ओम श्री सत्यद्रुदाय नमः। ओम श्री सत्यभामारताय नमः। ओम श्री सत्यग्रहरूपिणे नमः। ओम श्री सत्यप्रहरणायुधाय नमः। ओम प्रकृत्यै नमः. Take a kumkumam and offer to Lord Lakshmi Devi.
ॐ प्रकृत्यै नमः ॐ विकृत्यै नमः ॐ विद्यायै नमः ॐ सर्वभूतहितप्रदायै नमः ॐ श्रद्धायै नमः ॐ विभूत्यै नमः ॐ सुरभ्यै नमः ॐ परमाक्तिकायै नमः ॐ वाचे नमः ॐ पद्मालयायै नमः ॐ पद्मायै नमः ॐ शुचायै नमः ॐ स्वाहायै नमः ॐ स्वधायै नमः ॐ सुधायै नमः ॐ धन्यायै नमः ॐ हिरण्मयै नमः ॐ लक्ष्मी नमः ॐ नित्यपुष्टायै नमः ॐ विभावर्यै नमः ॐ आदित्यै नमः ॐ दित्यै नमः ॐ दीप्तायै नमः ॐ वसुधायै नमः ॐ वसुधारिण्यै नमः ॐ कमलायै नमः ॐ कान्तायै नमः ॐ क्षमायै नमः ॐ क्षीरोदसम्भवायै नमः ॐ अनुग्रहप्रदायै नमः ॐ बुधये नमः ॐ नघायै नमः ॐ हरिवल्लभायै नमः ॐ अशोकायै नमः ॐ अमृतायै नमः ॐ दीप्तायै नमः ॐ लोकशोकविनाशिन्यै नमः ॐ धर्मनिलयायै नमः ॐ करुणायै नमः ॐ लोकमात्रे नमः ॐ पद्मप्रियायै नमः ॐ पद्महस्तायै नमः ॐ पद्माक्ष्यै नमः ॐ पद्मसुन्दर्यै नमः ॐ पद्मोत्थवायै नमः ॐ पद्ममुख्यै नमः ॐ पद्मनाभप्रियायै नमः ॐ रमायै नमः ॐ पद्ममालाधरायै नमः ॐ देव्यै नमः ॐ पद्मिन्यै नमः ॐ पद्मगन्धिन्यै नमः ॐ पुण्यगन्धायै नमः ॐ सुप्रसन्नायै नमः ॐ प्रसादाभिमुख्यै नमः ॐ प्रभायै नमः ॐ चन्द्रवदनायै नमः ॐ चन्द्रायै नमः ॐ चन्द्रसहोदर्यै नमः ॐ चतुर्भुजायै नमः ॐ चन्द्ररूपायै नमः ॐ इन्दिरायै नमः ॐ इन्दुशीतलायै नमः ॐ आह्लादजनन्यै ॐ नमः पुष्ट्यै नमः ॐ शिवायै नमः ॐ शिवशाङ्कर्यै नमः ॐ सत्यै नमः ॐ विमलायै नमः ॐ विश्वजनन्यै नमः ॐ तुष्ट्यै नमः ॐ दारिद्र्यनाशिन्यै नमः ॐ प्रीतिपुष्करिण्यै नमः ॐ शान्तायै ॐ नमः शुक्लमाल्याम्बरायै नमः ॐ श्रियै नमः ॐ भास्कर्यै नमः ॐ बिल्वनिलयायै ॐ नमः वरारोहायै नमः ॐ यशस्विन्यै नमः ॐ वरारोहायै नमः वसुन्धरायै ॐ नमः उदाराङ्गायै नमः ॐ हरिण्यै नमः ॐ हेममालिन्यै नमः ॐ धनधान्यकर्यै नमः ॐ सिद्ध्यै नमः ॐ स्त्रैणसौम्यायै ॐ नमः शुभप्रदायै नमः ॐ नृपवेश्मगतानन्दायै ॐ नमः वरलक्ष्म्यै नमः ॐ वसुप्रदायै ॐ नमः शुभायै नमः ॐ हिरण्यप्र
प्राकारायै नमः ॐ समुद्रतनयायै नमः ॐ जयायै नमः ॐ मङ्गलदेव्यै नमः ॐ विष्णुपक्षस्थलस्थितायै नमः ॐ विष्णुपत्न्यै नमः ॐ प्रसन्नाक्षै नमः ॐ नारायणसमाश्रितायै नमः ॐ दारिद्र्यध्वंसन्यै नमः ॐ देव्यै नमः ॐ सर्वोपद्रववारिण्यै नमः ॐ नवदुर्गायै नमः ॐ महाकाल्यै नमः ॐ ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकायै नमः ॐ त्रिकालज्ञानसम्पन्नायै नमः ॐ भुवनेश्वर्यै नमः ॐ महालक्ष्मी नमः श्रीरमासहित श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः नानाविध परिमलपत्र पुष्पाणि समर्पयामि Now we are going to do the dhupam, deepam, nevedyam. Please take a dhupam. Om dashantam kulkulo dhupam sugandham jagamaharam आग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रचरत्यताम् यदतो अधिधाप्यल्पयन्नात्मकम्यमस्य बाहु बाहुरूपादावुच्येते यमदमासीद बाहुराजन्यकृतः पूर्वोदस्य यद्वैश्यः अध्यात्मं शूद्रो अजायत Satyanarayana Swami Dhupadipam Sandarshayami Achamaniyam Samarpayami and take some fruits and offer to Lord Satyanarayana. So sprinkle the water with the fruits. Om Bodhbhavasvaha Chandrama Manaso Jataha चक्षो सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चान्निश्च प्राणाद्वायुरजायत Namadevi Sameta Satyanarayana Swamine Namaha Kanarangapalani Amritopaharam Sarvam Nivedayami Achamaniyam Samarpayami and offer the tambulam. If you don't have a tambulam, please offer the yellow rice. Om Nabhya Asidantariksham शीर्ष्णाद्यौ समवर्तता पद्भ्यां शूद्रो अजायत Ramadevi Sameta Satyanarayana Swamine Namaha Karpura Tambulam Nivedayami Achamaniyam Samarpayami. Please take the Harati. Om Vedahamedam Purusham Mahantam Adityavarnam Tamasastu Pare Sarvani Rupani Vichitya Vedaha Namani Kutva Vivadantyaste Ramadevi Sameta Satyanarayana Swamine Namaha Mangala Nirajanam Sandarusha-jami Devalo Satyanarayana Swami Bhagavan ki Jai. And take some rice, yellow rice and some flowers in a hand. We are going to do the mantra pushpam. Om Jopam पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशवान् भवति चन्द्रमा वापां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशवान् भवति एवं वेद यो वामायतनं वेद आयतनवान् भवति आवाहिताभ्यः सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः विशेषतः रमादेवी समेत सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि अनया पूजया आवाहित सपरिवारसहित श्रीरमादेवी समेत सत्यनारायण स्वामिने नमः अस्मिन् कुम्भमध्ये अस्मिन् चित्रपटे अस्मिन् मण्डले च सुप्रीताः सुप्रसन्नाः वरदा भवन्तु रमादेवी समेत सत्यनारायण स्वामी प्रियता संकल्प. So now we are going to the chant Satyanarayana Swami Vratakatha. Sir. Take some yellow rice and pushpam. Do namaskar to Satyanarayana Swami. Sri Satyanarayana Vratakatha, Chapter 1. Once Shaunak and 88,000 other rishis assembled at the forest Naimisharanya and asked Maharishi Suta, the narrator of Puranas, O Maharishi, please tell us how mankind can attain salvation. Maharishi Suta replied,
Once Narada Muni asked Lord Vishnu, the consort of Lakshmi, the same question. I will tell you what Lord Vishnu told Narada, so listen carefully. Once Narada, during one of his sojourns to the various worlds, came to earth. There he saw the people suffering as a result of their past deeds. To alleviate their sufferings and bring about salvation, Narada travelled to Vishnu Loka. There he found Lord Vishnu adorned with conch, chakra, gada, and lotus in his 4 hands and a garland around his neck. Narada spoke humbly, O Supreme Lord, the Saviour of the destitute and the troubled, I surrender at thy feet. Lord Vishnu asked, Narada, why have you come here? Tell me what you want and I will fulfill your wishes. Narada replied, O Bhagavan, people on earth are suffering in many ways as a result of their own past sinful deeds. Please bestow thy grace and reveal to me as to how they can be helped. Lord Vishnu replied, O Narada, mankind can get rid of itself of all its sorrows by performing a puja called Satyanarayana Puja. This puja, when performed according to religious rites, will bring happiness, peace of mind and wealth in this life and salvation beyond. On hearing this, Narada was filled with joy and addressing Lord Vishnu thus, O Lord, in your infinite grace, please tell me the details of the puja that you have just mentioned, how and when to perform it, and who has performed it before. Lord Vishnu answered, this puja can be performed any month on a full moon day. One must gather his friends and relatives, perform the puja with devotion, and offer fruits, flowers, ghee, milk, yogurt, butter, wheat flour, sugar, and honey to the Lord. After the puja is over, he must read the Satyanarayana Katha and distribute the prasad to everybody. If the puja is thus performed, it will bring fulfillment to one's wishes. Particularly in the Kali Yuga, this puja brings contentment. Shri Satyanarayana Swami Maharpanastu. Chapter 2. Maharishi Suta continued addressing the assembled rishis. O rishis, I will tell you who all observed the Satyanarayana Puja in the past. Once there lived a poor Brahmin in the beautiful city of Kasi. Plagued by acute hunger, he used to wander about here and there every day. Lord Vishnu took the form of an old man, appeared before the poor Brahmin and asked, Friend, why are you wandering aimlessly? The poor Brahmin replied, Sir, I am a very poor man, unable to bear the pangs of hunger. I beg for alms. Sir, if you know a way out of this misery, please tell me. Whereupon Lord Vishnu, who was in the guise of an old man, replied, O Brahmin, Lord Satyanarayana grants his devotees wishes and removes their sorrows. So you should perform his puja and reap its benefits. Lord Vishnu then explained the details of the Satyanarayana Vratha to the poor Brahmin and disappeared. The poor Brahmin immediately resolved to perform the puja. After a sleepless night, he got up early in the morning and went to beg for alms. His mind fixed only on one thing, namely the puja. That day he got a lot of money with which he bought fruits, milk, yogurt and honey and performed the puja with his relatives and friends. With Lord Narayana's grace, he shed his poverty and lived a contented life. Every month on the full moon day, he performed the puja and finally attained moksha, salvation. Maharishi Suta thus told the assembled rishis the story which originally was narrated by Lord Vishnu to Narada Muni. The rishis then addressed Maharishi Suta, O the Great One, please tell us in detail who else performed the puja. Maharishi Suta continued, one day when the poor Brahmin from Kasi was observing the Satyanarayana Vratha, a woodcutter entered his house and asked for water. Seeing the Brahmin perform the puja, the woodcutter inquired what the puja was about and what good it would bring.
the Brahmin who had been bestowed with Lord Narayana's grace spoke. This is called Satyanarayana Vratha. Anyone who observes the Vratha will get all its riches. I myself have been bestowed with wealth. The woodcutter was delighted to hear this. He learned the proper way to perform the puja, ate the prasad that was offered, and went away. With Lord Satyanarayana in his mind, the woodcutter resolved that he would observe the Ratha with whatever he was going to make by selling the firewood that day. He went to that part of the city where rich people lived, sold the firewood, and made twice the normal profit. Pleased with his luck, the woodcutter bought bananas, sugar, milk, ghee, yogurts, honey, and wheat flour, and performed the Satyanarayana Puja with his friends and relatives. By Lord Narayana's grace, he acquired enormous wealth and lived comfortable and attained moksha. Shri Satyanarayana Swami Padarpanastu. Chapter 3. Maharishi Suta continued, O best of ascetics, I will now tell you the story further. In the olden days, there lived a wise king by the name Ulkamukha. He had mastered all his senses and always spoke the truth. He used to go to the temple every day and give gifts to the Brahmins. His lotus-faced wife was a pure and pious woman. One day the royal couple was performing the Satyanarayana Puja on the banks of the river Bhadrashila. At that time a merchant called Sadhu sailed by. Seeing the king perform some puja, Sadhu stopped by his boat, got off, and addressed the king humbly. O king, would you tell me what you are doing with such devotion and concentration? The king replied, O Sadhu, I have no children. In order that I may be blessed with children, I am worshipping the Almighty Lord Satyanarayana. On hearing this, Sadhu spoke humbly, O king, please tell me how to perform the puja. I would like to observe the Ratha as I too have no children. The king told him all the details. Sadhu returned home with great joy and told his wife Leelavati that they should perform Satyanarayana Puja, which will fulfill their desire to have children. He then resolved to perform the puja after the child was born. Then by divine grace, Sadhu's wife conceived, and in due course a beautiful daughter was born to them. They named the child Kalavati. One day, Leelavati reminded her husband of his promise to perform puja. Sadhu told his wife he would do the puja at the time of his daughter's wedding and got busy with his work. In the meantime, Kalavati grew up and blossomed into a lovely girl. Sadhu sent out messengers to find a suitable bridegroom for his daughter. One of his messengers found a good-natured and handsome boy from Kanchananagar. Sadhu found the boy to be a suitable match for Kalavati and celebrated his daughter's wedding with great pomp and show. But Sadhu completely forgot about the Satyanarayana Puja and thus angered Lord Satyanarayana. Then one day Sadhu went on a business trip with his son-in-law. He stopped to trade at Ratnapura that was ruled by King Chandraketu. Lord Satyanarayana placed a curse on Sadhu. One day some thieves robbed the king's treasury and were running away. The king's soldiers followed them in hot pursuit. The frightened thieves threw all the loot near Sadhu and escaped. Finding the king's treasure near Sadhu and his son-in-law, the king's soldiers arrested them and brought them before the king. The king ordered them to be chained and thrown into the prison. Because of Lord Narayana's Maya, nobody even listened to what Sadhu had to say in his defense. King Chandraketu also had their merchandise confiscated. Lord Narayana's curse did not spare Sadhu's wife. Some robbers broke into her house, and Leelavati lost everything. One day Kalavati was very hungry and ran out of the house. She wandered here and there and stopped at a house where Satyanarayana Puja was being performed. She stayed at that place until the puja was finished and ate the prasad
that was offered. When she reached home, it was late night. Lilavati asked her where she had been. Kalavati told her mother that she was listening to Satyanarayana Katha in somebody's house. Lilavati at once remembered her husband's promise to perform the puja and resolved to observe Satyanarayana Vrata herself. She collected her relatives and friends and prayed to Lord Satyanarayana to forgive their sins. Lord Satyanarayana was pleased with Lilavati's prayers. He appeared before King Chandraketu in his dream and told him to release the two merchants from prison as they were not the real thieves. If the king failed to do so, Lord Narayana warned him that his kingdom, wealth and children would all be destroyed. Next morning, the king told his counselors about his dream and ordered Sadhu and his son-in-law to be released. The latter was frightened and stood before the king with bowed heads. The king talked to them gently and said, You too have suffered a great deal because of your fate, but there is nothing to fear. The king returned their merchandise, gave them new clothes, lots of gifts, and bade them goodbye. Chapter 4. Sadhu and son-in-law loaded their boat with the riches given to them by the king and sailed homeward. Lord Satyanarayana wanted to test Sadhu further. He took the form of an ascetic with a trident, appeared before Sadhu and asked him what he was carrying in his boat. Without realizing that the ascetic was indeed Lord Narayana in disguise, Sadhu laughed mockingly and said, You Brahmin were thinking of stealing my things. We do not have any valuables in the boat except vessels. Whereupon Lord Narayana replied, O Sadhu, so be it. The ascetic then departed in great haste and stood by the seashore. When Sadhu went to his boat, he discovered to his horror that the boat was filled with vessels just as he had falsely told the ascetic. Sadhu swooned at the sight, but he was revived by his son-in-law spoke, This must be the curse of the ascetic. He must be a mistake. Let us go to him and ask for forgiveness. The two merchants then went to the seashore where the ascetic was meditating. They fell at his feet and repeatedly begged for his forgiveness. Pleased by Sadhu's devotion, the Lord said, Sadhu, do not weep. You suffer because you have broken your promise time and again. On hearing this, Sadhu prayed to God, O Lord, even Brahma and other devas drowned in your Maya cannot comprehend your various forms. How can I, with my limited knowledge, comprehend your various forms? I pray according to my limited knowledge. Please show me your true form and bless me. Upon hearing his prayer, God was pleased and granted his wishes, restoring his merchandise in the boat and disappeared. The two merchants joyfully sailed homeward. On reaching their hometown, they sent a messenger to their wives, informing them of their safe arrival. At that time, Lilavati and Kalavati were performing Satyanarayana Puja. Lilavati quickly finished the puja and asked her daughter to do so. She then hurried to the seashore to meet her husband. Kalavati, in her eagerness to meet her husband, forgot to eat the prasad and rushed to the seashore. This action of hers angered Lord Satyanarayana. He caused the ship and her husband to drown in the sea. Not finding her husband, Kalavati started weeping. All were wonderstruck and frightened. Sadhu was at a loss to know what to do. Thinking that it was Lord Narayana's Maya, he announced to everybody that he would perform Satyanarayana Puja and prayed to Lord Narayana again and again. At this, Lord Satyanarayana, the savior of the sinners, was very pleased and said, O Sadhu, your daughter did not eat the prasad in her haste to see her husband. So I made him and the boat disappear. Let her go home, take the prasad and then return. On hearing this, Kalavati rushed home and took the prasad. When she returned to the seashore, she found to her joy her husband and the boat. Sadhu then returned home happily with his relatives and performed the Satyanarayana Puja every full moon day.
With God's grace, he enjoyed all the comforts in this world and finally attained salvation. Shri Satyanarayana Swami Padarpanastu. Maharishi Sutta continued. Once there was a king called Tungadhvaja who underwent a lot of misery after refusing the Satyanarayana Prasad. One day, after hunting, he was resting under a shady tree. Some cowherds were happily performing Satyanarayana Puja nearby. The king, in his vanity, refused the prasad they offered. When he reached his palace, he found that his kingdom, his 100 sons, his wealth, and everything was destroyed. Then it occurred to him that Lord Satyanarayana was probably angry with him. He went back to cowherds, prostrated himself before Lord Satyanarayana, and performed the puja with great devotion. Lord Satyanarayana showered his blessings, and the king regained everything he had lost earlier. He lived happily and reached Vaikuntha after death. Maharishi Sutta said, O holy men, I have narrated to you Satyanarayana Katha, which was originally told by Lord Vishnu to Narada Muni. By observing this Vratha, mankind can attain salvation. In this Kali Yuga, observance of the Vratha can lead to fulfillment of one's wishes. Thus ended the narration of Maharishi Sutta, after which Shaunak and other rishis returned to their respective abodes. Bolo Satyanarayana Swami Bhagavan Jai. Satyanarayana Swami Padarpanastu. After the Mangala Mahaharati and Shodashopachara Pujas, no time. So please take a yellow rice and do the Sankalpam. Close your hand like this and keep it in a right eye. Repeat with me. Mama Upata Samasta Lurita Shakadvara Shri Parameshwara Prityartham Srimad Narayana Prityartham Adya Purvokta Evanguna Visheshena Vishishtaya Asyam Vartamanaya Paurnamyam Shubhadito Mama Saha Kudumbasya Sarvesha Ramadevi Sameta Satyanarayana Swami Prasadena Sakala Kshema Abhivriddhyartham Avahita Samasta Devatana Punah Puja Adya Karishe. Give the yellow rice into the cup and wash your hand. Offer the yellow rice to Lord Satyanarayana Swami. Om Ramadevi Sameta Shri Satyanarayana Swamine Namaha. Asanadhyupacharartham Akshadam Samarpayami. Gandhadhyupacharartham Akshadam Samarpayami. Pushpadhyupacharartham Akshadam Samarpayami. Samastopacharam Samarpayami. Dhupadeepartham Akshadam Samarpayami. And please offer the Kesari Naivedyam. Whatever we have, or otherwise you can offer the fruit. Om Bhurvasuvah iti Gandhanadan Kritva Madhuvataradayate Madhuksharam Dasintavaha Madhvirnas Santoshatihi Madhu Om Pranaya Swaha Panaya Swaha Jnanaya Swaha Vdanaya Swaha Smanaya Swaha Brahmane Swaha Saparivasita Ramadevi Sameta Satyanarayana Swamine Namaha Idam Mahanivedyam Amritopaharam Nivedavayami Sapadapaksham Amritam Nivedayami Achamaniyam Samarpayami Samastopacharam Samarpayami. And take some yellow rice and flower with your hand. Now we are going to do the mantra pushpa and upacharas, everything. Om Narayana Vishwahe Vasudevaya Dhimahi Tanno Vishnu Prachodayat. Satyanarayana Swamine Namaha. Mangala Neerajanam Sandarshayami. Om Duramasmarchhatravo yantu bhitaha Narindagni pranutam tadvishakhe Tanno deva anuvadanto yajnam Paschat parastadabhajanno astu. Saparivasahita Shri
रमादेवी समय सत्यनारायण स्वामिने नमः छत्रं दर्शयामि ओम आजुस्तागम अग्रे प्रमुखोक्तदेव प्रजापति प्रजा संविधानः रमासहित श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः चामरं समर्पयामि ओम राजाधिराजाय प्रसन्नसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः चामरं बीजयामि ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत मुखाचन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत दर्शयामि स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो नरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ओम केतन केतवे एषो मर्यावेशते शमुषद्भिरजायता चामराधि समस्तोपचारान् समर्पयामि hold some flowers and flowers with your hand ओम यो वां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशवान् भवति चन्द्रमा वा अवां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशवान् भवति एवं वेद यो पामायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो अग्नेरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अग्नेरायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद यो पामायतनं वेद आयतनवान् भवति वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद पामायतनं वेद आयतनवान् भवति असो वै तपन्नपामायतनम् आयतनवान् भवति यो मुष्यतपत आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अमुष्यतपत आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद पामायतनं वेद आयतनवान् भवति चन्द्रमा वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यश्चन्द्रमस आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद पामायतनं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणामायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद पामायतनं वेद आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद पामायतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योत्सुनापं प्रतिष्ठितां वेद तिष्ठति राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ तद्ब्रह्मा ॐ तद्वायुः ॐ तदात्मा ॐ तत्सत्यम् ॐ तत्सर्वम् ॐ तत्पुरोन्नमः अन्तश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु त्वय्यज्ञस्त्वं वषट्कारस्त्वमिन्द्रस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्मत्वं प्रजापतिः त्वन्तताप आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्मभूद्भुवस्वभरो नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि
तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः। सर्वेषां भक्तमहाजनानां सर्वमङ्गलप्राप्त्यर्थे आयुरारोग्याभिवृद्ध्यर्थे इदं वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। चतुर्वेदसेवाम् अवधारय। अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य होतारं रत्नधातमं हरिः ओं ऋषेत्वोर्जेत्वा वाजवस्तो वाजवस्तदेवो वस्सविदा प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाजकर्मणे। हरिः ओं अग्नायाहि वीतये गणानो हव्यदातये निहोदा सत्स बर्हिषि। हरिः ओं शन्नो देवीरभिष्टजा आपो भवन्तु वीतये संयोरभिश्रमन्तु नः। हरिः ओं अथादोदर्शपूर्णमासो व्याख्यास्यामः। प्रातरग्निहोत्रं हुत्वा अन्यमाहवनीयं वृणीय अग्नेऽन्वा दधाति नगतश्रियोऽन्यमग्निं प्रणयति। आद्यं पुरुषमीशानं पुरुहूतं पुरस्कृतं पदमेकाक्षरं ब्रह्मा व्यक्ताव्यक्तं सनातनं। जय जगदीश हारति। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण कहूँ किसी की स्वामी शरण कहूँ किसी की। तुम बिना और न दूजा तुम बिना और न कोई आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी। परब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख कल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किसी विधि मिलूं दया में किसी विधि मिलूं कृपा में तुमको मैं कुमुदे। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ अपने चरण बढ़ाओ द्वार बड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब तेरा सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा।
ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षदवर्जन्यः पृथिवी सस्यचारिणी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। देवराजाय नमः। ॐ पञ्चहोतो हवीनामीशः तं वा एतं पञ्चहोतकं सन्तं पञ्चहोतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रियाय वहि देवाः आत्मन्नात्मन्विद्यामन्यजनः। ॐ विष्णोरराटमसि विष्णो विष्णोस्नप्त्रेस्तो विष्णोस्योरसि विष्णोर्ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। सपरिवारसहित श्रीरमादेवी समेत सत्यनारायण स्वामिने नमः। समस्तापराधक्षमापणार्थं सन्मङ्गलप्राप्त्यर्थम् आनन्दमिदं पञ्चमुखदीपं सन्दर्शयामि। जय बोलो सत्यनारायण स्वामी भगवान की। श्रीरमादेवी समेत सत्यनारायण स्वामिने नमः। छत्रचामरादि समस्तोपचारान् समर्पयामि। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि सर्वाणि प्रथमान्यासन् देहनागं महिमानः सदन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। मण्डलात् अस्मात् कुम्भात् आवाहित समस्त देवताः रमादेवी समेत सत्यनारायण स्वामिने नमः। यथा सुखं यथा स्थानं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय च। श्रीरमादेवी समेत सत्यनारायण स्वामी परिपूर्ण अनुग्रह प्रसादेन सर्वेषां भक्तमहाजनानां सर्वाभीष्टफलसिद्धिरस्तु। Please take prasadam from Satyanarayana Swami and bless it yourself and bless your family members. This is a wonderful opportunity day to do the Satyanarayana Swami Vratam. Without the Satyanarayana Swami grace, we cannot perform the Satyanarayana Swami Puja. With His great grace, we got today. We did the Satyanarayana Swami Puja, and we get the blessing from Satyanarayana Swami to our family members also. So take the prasadam, be happy, always be safe. Thank you. Now we are priests are going to do the blessing. Om Shrirvarchasvamaयुष्यमारोग्यमाविदाच्छोभामानं महीयते धान्यं धनं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः। आराधित श्रीरमादेवी समेत सत्यनारायण स्वामी परिपूर्ण अनुग्रह प्रसाद फल सिद्धिरस्तु। थैंक यू। प्रसाद Yeah, please come.